रचाकुंडा पुलिस ने एक वंडेसाला बी फार्मा की तालिबा के अगवा के केस को हल करते हुए उसे झूठा साबित कर दिखाया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि इस तरह पुलिस को 10 फरवरी को एक फोन कॉल वसूल हुआ था, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर की तरफ से इस लड़की के अगवा की इत्तला दी गई थी। रचाकुंडा पुलिस ने 10 खुसूसी टीमें बनाते हुए इस लड़की की तलाश की और मामले को सुलझाने की कोशिश की। इस पर पता चला कि लड़की कुछ खानदानी मसाइल से दो चार थी, चुनाचे उसने अगवा की फर्जी कहानी बनाई। इस लड़की के अगवा के सिलसिले में एक ऑटो ड्राइवर को माखूज किया गया था। चुनाचे कमिश्नर पुलिस महेश भगत ने तमाम ऑटो ड्राइवरों से माजरत खाई की है। All our investigation officer by giving them the cash reward from the beginning till end. All our team member really they have done this Herculean task without any sleep, without taking any rest. They were constantly on the job of detecting this case and coming to the conclusion or taking the case to logical conclusion. So truth has come out now. This case is a false case, is a fabricated case. No one has kidnapped the victim. No one has done any sexual assault and all. Basically the purpose was she is not happy, it seems, and she want to go away from the house, and for that purpose she has fabricated all this story. Sir, any case registration of So this case now will be referred as a false case, and then the investigation officer will be informing the court to take action for misleading the investigation agency. So under 182 CRPC, court will initiate action on it. Thank you, and my thanks to all media people who have cooperated with us during the investigation, and my sincere request to media people that not to distort the facts when the investigation is on, and not to do media trial, or not to declare innocent person as an accused and display their photographs in any mean. Thank you.